हेलो एवरीवन। तो सब आसीगल राइट। स्टार्ट करिए इकोनॉमिक। राइट। ओके, स्टार्ट करवा। देखो तुम मान एसएचजी गोटे संजीवनी बैच पुलिस कनेस्टेबल की ठीक अच्छे फ्री बैचेस अच्छी हाँ ना नहीं कौन प्रकार पेमेंट तुमको करने को पड़ो ना हाँ ना नहीं टोटल क्लासेस संजीवनी देखी गुड इवनिंग गुड इवनिंग कालिया गुड इवनिंग। तो फ्री क्लासेस तुम मान आसी राइट। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज तुमको आ रही स्टार्ट कर दबा एथर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दबा राइट। हम्म देखो तुम मन आसला फास्ट क्वेश्चन। अरे अरे डायरेक्टली आंसर आसी नहीं। Who are the recipients of 2025 Nobel Prize in Economic Science? 2025 रो इकोनॉमिक्स रे नोबेल प्राइज किए पाइछन? आंसर तो तुम मन गोटे बोनस आसी जाइछि हाँ ना नहीं राइट। तो आंसर किए हिजबे जोएल मैकर, फिलिपी एगियन एंड पीटर होइट राइट हाँ ना नहीं। किए पाइछन्ति नोबेल प्राइज के 2025 रो नोबेल प्राइज किए पाइछन्ति जॉन मकर, फिलिपिन्स अफगन एंड पोएट होइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the official name of the Nobel Prize Economics? Official name कौन अछि Nobel Prize Economics रो official name कौन अछि? कुह कमेंट सेक्शन में कुह। कुह कौन हवा आंसर? कालिया कहूची 2B द Savage Reserve Bank Prize in Economic Science in memory of Alfred Nobel हाँ ना नहीं अल्फ्रेड नोबेल करो तांकर स्मृति रे हाँ ना नहीं कौन चलथिला नोबेल प्राइज ए पर्यंत दिया होतला। ओके गुड का दिया गुड। तो आंसर कौन है जीवो बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। For what reason was the 2025 Nobel Prize in Economic Science awarded? को कारण पई 2025 रे अवार्ड करा जायथला? For developing the theory of the creativity destruction and identifying the prequest for sustained growth through technological progress, for their work in microfinance and its impact on the poverty reduction, for their contribution to the behavioral economics and its impact on the financial decision making, for their research on the causes and consequences of feminization. कौन अब आंसर को गुड कालिया गुड 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 गुड। तो आंसर कौन है for developing the theory of creativity of destruction and identifying the prerequisite for sustained growth through the technical progress. Okay तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कालिया। What is the main contribution of Philippine Afghan and Peter Hoyt's work that recognized with Nobel Prize? They developed the theory of creative destruction. They identified the pre-quest for sustained growth. They provide a new model for the understanding economic development. They found that innovation is the main driver of the economic growth. कौन हबा ए बी सी डी डी ऑप्शन टा जगह रही जाए कौन इज आंसर? आंसर कौन है कालिया कहूँ सी। ओके नेक्स्ट ओके
देखो आंसर हे जिवो थियोरी ऑफ द क्रिएटिविटी डिस्ट्रक्शन माने नहीं द डेवलप थियोरी ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आंसर हे जिवो ए ओके काले एटा भूल हे गला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ये थिला नोबेल प्राइज करेंट रे किछि टॉपिक नेक्स्ट हमें जिबा टैक्स सिस्टम ऊपर को जिबा राइट व्हिच फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स जीएसटी सेल्स इनकम वैट हम्म हाँ मिनती बीडी पे ये क्लास हबो सबु पई ऑल ऑफ दी पई ऑल पर्सपेक्टिव रे जिंस होचे मिनती कहला सी कालिया कहला सी कौन कहला क्वेश्चन डायरेक्ट टैक्स कोटा जीएसटी सेल टैक्स इनकम टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स देखो डायरेक्ट टैक्स जोटा कि कस्टमर माने पीपल पाखरो डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाए ताकू कह जाए कौन डायरेक्ट टैक्स जोटा भाया मीडियम है कि जाए होना नहीं ताकू कह जाए इनडायरेक्ट टैक्स होना नहीं इनडायरेक्ट टैक्स तेणु इनकम टैक्स ता डायरेक्ट डिडक्ट है कि गवर्नमेंट को जाए तेणु आंसर कौन है जीवो आंसर है जीवो सी होना नहीं इनकम टैक्स गुड एवरीवन एक्सीलेंट नेक्स्ट क्वेश्चन which tax is levied on the value addition at each stage of the production प्रतिटी प्रोडक्शन प्रतिटी स्टेज रे को टैक्स ता ऐड है कि चाहिए प्रॉपर्टी टैक्स वैट वैल्यू एडेड टैक्स ई स्टेट टैक्स कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कौन हम आंसर हम्म कोह कालिया कोची डी 6 नंबर डी देखिबा मिनती कोची बी देखो तुमको गोटे गोटे जिनस मु कहितले आगुरु फास्ट कौन होतला गहम गहमरु अट्टा अट्टारु कौन बिस्कुट बिस्कुट रु केक प्रति जगह कौन होतला गहमर प्राइस 35 हेला 55 पर केजी कथा कहूँ मना नहीं बिस्कुट 1 केजी पाखापाखि 130 जदि आर 1 लिटर पाखापाखि जीवा अबाउट सेक को जदि जीवा 600 प्रति जगह कौन होची वैल्यू एडिशन हे जाउछ आ से वैल्यू एडिशन को कौन कह जाए वैल्यू जदि वैल्यू एडिशन होची आबे तो ए जो 20 टंका जो वैल्यू एडिशन हैला तापरे भी टैक्स पड़िबो ना पड़िबोनी तेणु ताको कह जाए वैल्यू एडेड टैक्स आंसर हे जिवो बी गुड मिनती कालिया टिके भूल हे गेला ओके कौन कहले बुझी पल्ला वैल्यू एडिशन प्रतिटी जगह जेतेबेले वैल्यू एडिशन हे जिवो तो वैल्यू एडिशन ऊपर तापर जो टैक्स पड़िबो ताको कह जाए वैल्यू एडेड टैक्स वैट ताको कह जाए आगुरु कहा जाउथिला एबे टैक्स नाही नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैट एटा कौन कहबी वैल्यू अवेयरनेस टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स विजिलेंस एडेड टैक्स विजिलेंस अवेयरनेस टैक्स बहुत इजी क्वेश्चन तम मानक पई बहुत इजी क्वेश्चन प्रणाम कलश प्रणाम कड़े जाइथिलो गुडाई क्वेश्चन सरी गलानी तो आंसर कौन हो बी ओके वैल्यू एडेड टैक्स बहुत इजी क्वेश्चन अच्छा which tax is introduced to prevent the cascading effect of multiple taxes service tax gross receipt tax value added tax excise duty होना नहीं cascading effect को बंचेबा पई होना नहीं सॉरी कलश तेणु कैस्केडिंग इफेक्ट को बंचेबा पई कि होना नहीं को टैक्स इंट्रोड्यूस करा जायतला गुड कलश हां ऐड को रिप्लेस कराई छी जीएसटी से एक्साइज ड्यूटी कालिया को डी ओके कलश को भैट ओके देखो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ मल्टीपल टैक्स को बंचेबा पई कि कोन कराइतला वैल्यू एडेड टैक्स को इंट्रोड्यूस कराउतला होना नहीं
आंसर हे जिवो सी हो ना नहीं वैल्यू एडेड टैक्स नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स लेव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स जे कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लेड कराई छी सेल टैक्स एक्साइज ड्यूटी इनकम टैक्स कस्टम ड्यूटी क्वेश्चन एटा कथा कोन बुझो डायरेक्ट टैक्स कहा द्वारा गवर्नमेंट द्वारा कराई छी कोन हबा आंसर that is income tax right कौन हबो आंसर इनकम टैक्स ओके आंसर हे जिवो सी इनकम टैक्स गुड नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा what was the ultimate economic burden of an indirect tax usually borne by the intermediary the government the consumer the producer किए indirect tax generally bear करे borne करे गुड कलश किए bear करे सी कंज्यूमर ओब्वियसली टैक्स सबु बेले किए कंज्यूम करे जे सॉरी टैक्स किए बियर करे जे कंज्यूम करे जो लोकटी जिंस को कंज्यूम करूथिबो सीए ही कौन करिबो टैक्स को बियर करिबो होना नहीं इन केस ऑफ सपोज तमे एकना बाजार को जाउछ गोटे वीडियो कथा मन पका पूर्व वीडियो कथा मन पका जो कथा कहउथिले गोटे जिंसर प्राइस एक्स अछि जदि तार 40% ऑफ एक्स जदि बियर कला से किए बियर करिवो ये कंज्यूमर ही बियर करिवो होना नहीं तेणु कंज्यूमर टू पैसा नै कि कोन करा जाय से कोन करे गवर्नमेंट को सप्लाई करे होना नहीं कोन करे गवर्नमेंट को सप्लाई करे राइट कंज्यूमर ही हबो ओके कालोस गुड कंज्यूमर ही देबो होना नहीं कालोस को कंज्यूमर ही दबो कहीं तुम कंज्यूम करुच जिनटा को मन नहीं गोटे वीडियो कथा कही मन पड़ू 40% When was the goods and service tax implemented in India? 1 जुलाई 2017 एप्रिल 1 2017 अगस्त 1 2017 जनवरी 1 2017 जीएसटी केबे इम्प्लीमेंट हेतला क्वेश्चन अछि एटा ठीक अछि केबे इम्प्लीमेंट हेतला को मिन्नती बेहरा मिन्नू ओके 2017 तो सब जगह ठीक हो जाइए मास कोटा कार्लोस कहलानी रे कार्लोस बाबू रे तो नाटा कौन एक्चुअल बेसिस रे कह मना नहीं मते लगुच मुझे कुआडे पढ़ाऊँ आंसर कौन हम 1 जुलाई 2017 राइट जीएसटी डे गुड 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 कार्लोस जीएसटी डे केबे सेलिब्रेट करा जाए 1 जुलाई 2017 ठीक अछि which tax was abolished after GST implementation GST जतल इंप्लीमेंट कराला को टैक्स को कढा गला सर्विस टैक्स इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स सेल टैक्स जीएसटी जतल इंप्लीमेंट हैला कोट इरे लुक्का हां हां कार्लोस पुणी लुक्का है जे तुम मानकर एमती सब नेम चेंजिंग ऑप्शन थाए विजिबल गोटे हे जिवो माने नहीं एरी लुक्का चेंज हे जे कार्लोस माने नहीं देखो कौन हम आंसर कह जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन पर आ भीतर को टैक्स को अबलिश करा जाइतला तो आंसर कौन हे आंसर हे सर्विस टैक्स है आंसर कौन हे सर्विस टैक्स कौन हेतला अबलिश हेतला जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन पर होना नहीं ठीक अछि आंसर हेला सर्विस टैक्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय कहा द्वारा जीएसटी काउंसिल चेयर करा जाए प्राइम मिनिस्टर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आरबीआई गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन हम आंसर
कौन हम आंसर कह मिनती कौच बुझी हेलानी कौन बुझी हेलानी देख प्रीवियस क्वेश्चन कथा कौच तो प्रीवियस क्वेश्चन कहला जीएसटी जिते इम्प्लीमेंटेशन है सर्विस टैक्स टा गोटे भेराइटी ऑफ टैक्सेस थिला ताको कम करके सिंगल टैक्सेस कौन है कौन जीएसटी होना नहीं गुड्स एंड सर्विस टैक्स ता भीतर गोटे टैक्स थिला जोटा सर्विस टैक्स ताको कौन करागला अबोलिश करागला होना नहीं नेक्स्ट तो कथा ला जीएसटी काउंसिल का द्वारा चेयर करा जाए राइट प्रणाम प्रणाम चेरी चेरी जय जगन्नाथ अच्छा कौन कहूची रे लुका कौन कहूची मदर ऑफ नाई मु ए सब जिंस मु कहि परिबिनी हो ना नहीं तो आंसर कौन है जीवो जीएसटी काउंसिल का द्वारा चेयर करे जाए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा गुड मिनती कौन है जाए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा करा जाए ठीक अछि के चेयर करंती जीएसटी काउंसिल को हो ना नहीं ओके ओके हाँ एबे बुझिली हाँ 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 कार्लोस एबे बुझिली ओके कौन पे तुम्हें कहल गुड छुआ भी हमर माने डायरेक्टली आंसर दौना इनडायरेक्टली आंसर दबा आरंभ कले राइट नेक्स्ट क्वेश्चन what is the main benefit of input tax credit in GST input tax credit रो होना नहीं benefit कौन avoid double taxation increase tax burden reduce direct taxes applies only to finished goods कौन हबो कौन हबो आंसर इनपुट टैक्स क्रेडिट तार बेनिफिट कौन हबो हाँ हाँ बुझिली लुका कौन कहया ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ आंसर कौन हबो कालिया कहूची बी कालिया कहूची बी कालिया एग्जाम रे आंसर दियो इमोशन हुनी इनपुट टैक्स क्रेडिट पुणी इमोशन है गला लुका इंक्रीज टैक्स बर्डन ओके आंसर हबो ए अवॉइड डबल टैक्सेशन होना नहीं डबल टैक्सेशन को अवॉइड करबा ला इनपुट टैक्स क्रेडिट इन जीएसटी राइट ओके आंसर कोन जिवो ए अवॉइड डबल टैक्सेशन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेट वाज द फर्स्ट पास टू जीएसटी बिल सब जगह आंसर आसी जाउछि ओ तमने छुआ किए कोन हैला जीएसटी बिल किए इंप्लीमेंट करिथिला फास्ट किए आंसर तो लिखा है हो दियो देखी के दियो आंसर आंसर के हितला सी ओके आंसर के फास्ट के करथिला जीएसटी बिल के पास करथिला आसाम ओके ठीक अछि राइट अच्छा तुम पे एटा बोनस हो हला बोनस तो माने को पे देखि के दे दियो आंसर जस्ट फॉर इमेजिन एठी आसी गला जदि एग्जाम रे जदि एमती गोटे क्वेश्चन पळे आसो जा साइड रे आंसर लिखा तो दिस इज द करेक्ट आंसर हो ना नहीं तो माने सोने पे सुहागा ना कि सोने पे सुहागा चेष्टा कर भगवान को डाक सेमती तुम टाइम आसु ओके नेक्स्ट IGST levied on interstate supplies, interstate supplies, on an interstate supplies, both intra and interstate supplies within a union territory. होना नहीं कुह कौन हम आंसर कुह तो एते हसनी आंसर दियो एते हसीबा ठीक नुहे कौन आंसर कार्लोस कहूची सी बोथ इंट्रा एंड इंटरस्टेट ना ना इंट्रा नुहे रे बाबा केवल इंटरस्टेट है कि आंसर हम आईजीएसटी केवल इंटरस्टेट भितर जो सप्लाई करा जाए इंट्रास्टेट भितर नुहे होना नहीं आंसर हो इंटरस्टेट सप्लाईज होना नहीं ठीक अच्छे ना 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 लुका केवल इंटर जाए इंट्रा रे जाए नहीं प्रणाम वर्षा वर्षा एबे आसला
आंसर हो बी। Under GST law, which of the following is not a component of GST? CGST, SGST, IGST, both CGST and SGST on same transaction are not possible. कौन हब आंसर? वर्षा एबे आसिला। कौन आंसर हबो? आंसर कौन हबो कुह? कोटा जीएसटी लॉ भितरे माने बिलोंग्स करे नाही। कालिया कहूची डी, मिनती कहूची डी। ବର୍ଷା ତାର ବା ସାଇକେଲ ପମ୍ପଚର ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ଡାକିଥାନ୍ତା କଣ? କହୁଛି କ୍ଲାସ ଆସିଲ ମତେ ଡାକିଲନି। ଓ the answer is what D. Both CGST and SGST on the same transaction are not possible. Either CGST lagibo, otherwise SGST lagibo, right? किंतु डायरेक्ट एका संगे दुईटा क लॉ लागि परिबो नाही, होना नहीं? आंसर इज डी, राइट? Next question. Which article of the Indian Constitution established the GST Council? को आर्टिकल अछि? अरे पॉलिटी सब्जेक्ट को पळेला रे। आर्टिकल 270, आर्टिकल 279 ए, आर्टिकल 324 ए, आर्टिकल 280। सीबीएसई वाला मु ओडिया रे कहली बुझी पारलो ना बुझी पारलोनी? सीबीएसई वाला बुझी पारलो? आर्टिकल 270, 279 ए, 324 ए टू 80। ए माने कौन बुझी पारुछ? जदि एटा पछरे एडिशन जदि हेइथिबो ताले ताको ए रे हे भूल जगह हाथ मारदेले। तो आंसर कौन हेगला? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जीएसटी काउंसिल कोथरे अछि? आर्टिकल 279 ए, होने नहीं? आंसर कौन? 279 ए रे अछि, होने नहीं? रूपालिनी गोच्छायत बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल चेयरपर्सन किए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस? कौन हम आंसर को? जीएसटी काउंसिल चेयरपर्सन किए? जीएसटी काउंसिल चेयर किए करे? किए चेयर करे जीएसटी काउंसिल को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फाइनेंस? मिनती कहलानी सी। ओके, ये चेयर करंती यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करंती। के चेयर करंती? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ ना नहीं? द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर शॉप राज द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, राइट? नेक्स्ट देखो, संजीवनी बैच तुम कि फ्री आसी मन रखिबो। पुलिस कॉन्स्टेबल कि 2025 पुलिस कॉन्स्टेबल संजीवनी बैच पूरा फ्री तुम मान, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the quorum for a meeting for the GST Council? One third of the total members, half of the total members, one fourth of the total members, two third of the total members. Quorum केते बेले हबो GST Council ले? Quorum केते बेले हबो? Quorum केते बेले हबो? Carlos कुछ 1/10 आउ 1/100 ना? जणे मेंबर तो हाँ कह देले quorum हे जिवो। तो आंसर जेतिक मेंबर अछंती तार जदि 1/4 मेंबर कहले, टोटल मेंबर जदि कहले 1/4, 1/4 ना 2/3?
1/4 हेतु देख 1/4 जो टोटल मेंबर जो करेंगे जे जीएसटी काउंसिल कोरम हम ना नहीं 1/10 नुहे रे बाबा 1/4 ठीक अच्छे आंसर हो 1/4 बाबा बाबा रे कालस तू कौन जिनस मु जीएसटी काउंसिल कथा कहूचे तू पार्लियामेंट भितर पशिलुनी जीएसटी कथा मु कहूचे हाँ सब डिलीट कर पकाओ ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन द जीएसटी काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वेयर इज द हेडक्वार्टर लोकेटेड जीएसटी काउंसिल हेडक्वार्टर कोठी अछि मुंबई चेन्नई न्यू दिल्ली कोलकाता आंसर कौन अछि लुका माड खाइब तम भलिया छुआ भूल करबा कथा नुहे खाली पाखरे ना बास मिनती तमे हला मेंढा गोटे मेंढा जुआडे जीव से अलगा सब मेंढा ता पछ पछ जिवे ना नहीं कोडी अछि आंसर अछि न्यू दिल्ली रे हेडक्वार्टर अछि कोडी अछि न्यू दिल्ली रे अछि नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following bodies functions as the secretary of the GST council होना नहीं होना secretary of the GST council होना नहीं को body function करे chairman of the revenue secretary union revenue secretary secretary of the finance ministry joint secretary of the finance ministry आंसर कौन हबो को आंसर कौन हबो को नाइ लुका एमती कहतनी झील पिला केवे खराब कहबनी तुम मानक कहले तुम गोटे कान में पुरेब आ गोटे कान में काढ़ीदब यहाँ मुझे भलसे जानी बट से देह को नहीं जी तनिषा ओके नुआ नुआ छुआ सब आस तनिषा ओके कौन हम आंसर कह आंसर किए है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज फंक्शन एज द सेक्रेटरी ऑफ द जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरी किए हुए आंसर हम यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी होना नहीं समस्ते बोल जड़े सी कहला तो पछरे सी लंबिला होना नहीं अरे भाई तुम्हें देख गोटे गाईर गुहाल अच्छी गोटे मेढार गुहाल अच्छी गोटे मेढा जब गाईर गुहाल पशिगला गला तो से गाईर गुहाल समस्ते पशिले तो आंसर कौन हो बी यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी होना नहीं ओके आंसर हो बी यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरी हिसाब रे ओके what was the minimum percentage of weightage vote required to decision for a GST council आंसर कौन कह 2/3 1/2 3/4 1/3 आंसर कौन कहूँ कह कौन आंसर कह आंसर कौन कह बढ़िया क्वेश्चन आपको पार्लियामेंट भितर पुरेबनी मु क्वेश्चन पचारुछि जीएसटी काउंसिल डिसीजन व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज वेटेज vote required for the decision of the GST council कथा पचारुछि 2/3 1/2 3/4 1/3 ओके कालिया कहूँ ए तनिषा कहूँ ए रूपाली कहूँ ए आंसर हो कौन ओबियसली तमे 1/3 बोधे 2/3 आंसर हो 2/3 ओके 2/3 एतिकी हेले कौन हो वेटेज वोट कौन वोट डिसीजन हवा पे कि 2/3 है नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन এটা कौन कहली 2/3 नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीएसटी काउंसिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फॉलोइंग्स एक्सेप्ट आ भितर सब को जीएसटी कौन काउंसिल कौन करे फॉलो करे रेस्पॉन्सिबल करे किंतु गोटाई छड़ा आंसर हे गेला केते अच्छा कौन कहले ऑप्शन ने रिकमेंडिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विस दैट मे बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी और exempted making recommendation of the rates of tax under the GST okay recommending on the date on the which GST may be lied on the supply okay deciding whether the particular good or service should be included in the or excluded from the purview of the GST कौन हम आंसर कालिया कहूँ सी चेरी ता पछरे लागिला सी
चेरी ता पछरे लागिला सी। अच्छा तापरे आउ किए छिला रूपाली ता पछरे लागिला सी। देखो कहला जीएसटी काउंसिल को जिनस को रेस्पॉन्सिबल करे रेकमेंडिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विस दैट मे सब्जेक्टेड टू जीएसटी और एग्जेम्प्टेड कथा कौन कहूँ बुझ जीएसटी भितर ए जिनस को इनक्लूड करा जिवो ना करा जिवो नाही एटा जीएसटी काउंसिल कौन करे रेस्पॉन्सिबल एटा निए माने नहीं मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर द रेट ऑफ टैक्स ऑन द जीएसटी केते टैक्स करा हबो इकन जो चेंजेस हैला टैक्स रे जो चेंजेस हैला जोथि पे सार को मन रे दुख हैला होना नहीं ये जिनस पे कि कौन हबो जीएसटी काउंसिल रेस्पॉन्सिबल नबो रिकमेंडिंग ऑन द डेट ऑफ व्हिच जीएसटी मे बी लाइव ऑन द सप्लाई होना नहीं को दिन जेमति हमर लागिला केते सेप्टेम्बर 22 रे लागिला ना 22 सेप्टेम्बर रे लागिला ना एबे नुवा जीएसटी स्लैबटा होना नहीं को डेट रे लागिबो ताकू भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होना नहीं তাহলে কোটা নিয়ে নি ডিসাইডিং whether a particular good or service should be included in or excluded from the purview of the GST होना नहीं ए कामटा खाली करेनी तो आंसर कौन हे जीवो डी हला आंसर हे जीवो डी ठीक अछि काहे की कहला कथा बुझो ए जगह रे जीएसटी कहिबो एटा को काढी दियो कि एटा को इनक्लूड करि दियो किंतु फाइनल डिसीजन कहबा कथा कोडी थाए पार्लियामेंट हाथ रे थाए का हाथ रे थाए पार्लियामेंट हाथ रे थाए ताको भितर को इंसर्ट करबा किबा भितर को काढीबा आंसर हे जीवो डी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइमरी रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन अच्छा जीएसटी काउंसिल सला फाइनेंस कमीशन आरंभ होला कौन प्राइमरी रोल कौन अच्छी यार प्रिपेयर द नेशन बजेट डिस्ट्रीब्यूट द टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट रेगुलेट ट्रेड एंड कॉमर्स ओवरसीज द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया कौन हम आंसर सेटा थिला जीएसटी काउंसिल एबे आसला फाइनेंस कमिशन तनिषा डी थिला आंसर कुछ नो आइडिया जो आंसर कौन है जीवो कौन है जीवो फाइनेंस कमिशन काम कौन टैक्स को कौन करे डिस्ट्रीब्यूट करे का भितर यूनियन आउ स्टेट भितर टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करे गुड गुड एवरीवन होना नहीं ठीक अछि ठीक अछि तर प्राइमरी काम कौन आसीबो आसीबो लुका टिके थय धर आसीबो से जिनस आगु कानिबे ओके जो कथा तमे कहला से जिनस अछि एजी क्लास रे the finance commission of the constitutional body established under which article of the Indian constitution आसीगला पुणी पॉलिटी क्वेश्चन 270 280 324 300 होना नहीं सीबीएसई माने पई 270 280 324 300 कौन हबा आंसर को कौन हबा आंसर को 280 लुका कहूची 280 नेक्स्ट आंसर हो बी 280 होना नहीं आंसर हो बी 280 होना नहीं फाइनेंस कमिशन कोठी अछि आर्टिकल 280 गुड इवनिंग हाँ मधुस्मिता कुआडे जाइथिला मु तुमको बहुत खोजुतले एउठु नमस्कार हाँ एठी पड़ी मोर एठी ही पड़ी आ कोठी नहीं गोटे रहता आंसर ना बढ़छ आंसर हो फाइनेंस कमिशन है आर्टिकल 280 होना नहीं हाँ हाँ बुझेले कौन आर्टिकल 270 जामु लुका how often the finance commission constituted every 2 years every 5 years every 7 years every 10 years केते दिन रे माने नहीं केते दिन रे फाइनेंस कमिशन गोटे गोटे एस्टाब्लिश करे माने नहीं प्रति 2 वर्ष रे प्रति 5 वर्ष रे प्रति 7 वर्ष रे ना प्रति 10 वर्ष रे आंसर कोन हबो कुह प्रति 5 वर्ष रे कालिया कहूची 5 कालिया प्रति 5 वर्ष रे ओके बुझिले
आंसर हे जबो एवरी 5 इयर्स रे होना नहीं ठीक अछि क्वेश्चन हला the recommendation of the finance commission are legally binding on the government advisory in nature subject to the approval of the prime minister binding on the state government only कथा कोन हला आर रिकमेंडेशन आसीबो जे फाइनेंस कमिशन ना को नेचर रे थाए को नेचर रे थाए होना नहीं लीगली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऊपर लीगली बाइंडिंग करे होना नहीं ना एडवाइजरी इन नेचर रे थाए को एडवाइज केवल ताको एडवाइजरी नेचर रे नबा subject to approval of the prime minister binding on the state government only आंसर कोन हबो को कार्लोस कोची सी लुका कोची सी कालिया ए कहि के काटी देला नेक्स्ट है कालिया पुनी सी कहला काहे ना लुका कोची सी होना नहीं अच्छा पीएम अप्रूवल दे एटा सुन आ नेचर हला एडवाइजरी इन नेचर कथा कोन कहली बुझी पालो आ नेचर हला एडवाइजरी इन नेचर हला कि फाइनेंस कमिशनर रिकमेंडेशन गुडा को सबु तक कोन हला माने नहीं सबु तक कोन हबो एडवाइजरी इन द नेचर हबो राइट ठीक अछि लुका जहा कहछ ठीक कहछ से पचार यार नेचर कोन क्वेश्चन बुझ क्वेश्चन कोन पचार बुझिल सेटा बुझिल जे क्वेश्चन टा कोन पचार एई तो जिंस नेक्स्ट क्वेश्चन what is the number of the members in the finance commission 3 members 4 members 5 members 6 members गोटे चेयरमैन दीटा मेंबर गोटे चेयरमैन तीनटा मेंबर गोटे चेयरमैन चारिटा मेंबर और गोटे चेयरमैन पांचटा मेंबर कौन हम छटा मेंबर ओके 3+3 अच्छा नेक्स्ट ये कौन कहछ टिके कह दियो मु देखि दिए लुका कहछ 3+3 कालिया कहछ 6 मिनती कहछ ए तनिषा कहछ डी कालिया कहछ 3+3 चेरी कहछ की आंसर ओके 6 अच्छा डी 3+3 मन रख आंसर हम सी रूपाली एत बेले गोटे ठीक आंसर देला तो सी हम गोटे चेयरमैन था चार जन मेंबर था केते जन गोटे चेयरमैन था चार जन मेंबर था ना नहीं ओके आंसर हो सी है ना नहीं तांको की अपॉइंट करती प्रेसिडेंट अपॉइंट कर राइट द फाइनेंस कमिशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू कहा को रिपोर्ट सबमिट करते हाँ कहा को सबमिट फाइनेंस कमिशन रिपोर्ट सबमिट करते द पार्लियामेंट द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया द सुप्रीम कोर्ट कहा को फाइनेंस कमिशन जो रिपोर्ट आने कहा को दिए आंसर कौन हम कार्लोस कोच सी प्रेसिडेंट ओके गुड आंसर हो कौन सी द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया को फाइनेंस कमिशन कौन करे ता रिपोर्ट सबमिट करे राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जबा अच्छा सी प्रेसिडेंट को दबो होना नहीं फाइनेंस कमिशन का दबो ये लोअर हाउस और अपर हाउस प्रेसिडेंट कौन करेंगे लोअर हाउस और अपर हाउस रे कि प्रेसिडेंट ही सबमिट करे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमिशन होना नहीं सजेशन मेजर suggesting measure of the argumentation of the consolidated fund of state
determining the pay scale of the government employees, regulating the stock market, conducting audits of the government account. Answer कौन हो? फाइनेंस कमिशन कौन कहूँ एडवाइजरी नेचर हम हाँ ना नहीं देखो ऑप्शन देखले तुम आंसर दे दे पारिबो कौन हम ऑप्शन कह ए सजेस्टिंग मेजर ऑफ द कौन एग्युमेशन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट हाँ ना नहीं आंसर हो ए ठीक अच्छे गुड गुड एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन हु कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमिशन इन इंडिया फाइनेंस कमिशन को जिते कंस्ट्रक्ट करा जाए किए करे द प्रेसिडेंट द फाइनेंस मिनिस्टर द पार्लियामेंट द रिजर्व बैंक ऑफ द गवर्नर आंसर एक किसी समय पूर्व मुझे कहूली हाँ ना नहीं किस समय पूर्व एक कहूली कौन हम आंसर कह लुका कौच सी किए कॉन्स्टिट्यूट करे सॉरी किए कॉन्स्टिट्यूट करे फाइनेंस कमिशन को प्रेसिडेंट फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट और रिजर्व बैंक ऑफ द गवर्नर किए करे द प्रेसिडेंट ओके आंसर है ए द प्रेसिडेंट किए कॉन्स्टिट्यूट करती द प्रेसिडेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करती ओके नेक्स्ट हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमिशन हु वाज द चेयरमैन विजय केकर वाईवी रेड्डी केसी नित्योगी ए एम खुसरो किए थिले किए थिले हम्म कालिया कौच सी कालिया कौच सी ओके मधु कौच सी मिनती कौच ए गुड आंसर हम केसी नियोगी एबे लुका तमे जो कथा कहथिलो इंडिया रे वर्तमान फाइनेंस कमिशन किए अछंती वर्तमान किए अछंती को किए अछंती किए अछंती वर्तमान अरविंद पान पानगेरिया ठीक अछि किए अछंती अरविंद पानगेरिया ठीक अछि किए अछंती अरविंद पानगेरिया अछंती चेयरमैन वर्तमान ओके करेंट इंडिया रो फाइनेंस बाकी जो 4 जन मेंबर अछंती कि अजय नारायण झा आनी गोटे मैथ्यू डॉक्टर मनोज पंदा एंड सौम्यकांति घोष हाँ नहीं सेक्रेटेरिएट किए अछंती ऋत्विक रंजन पांडे हाँ नहीं वित्त आयोग रो रिपोर्ट ओके नेक्स्ट the recommendation of the finance commission are recommendation of finance commission are binding on the government advisory in nature binding on the same matters and the advisory in others dependent on the finance कौन finance minister's decision ये बोलते कही कि समय पूर्व सेम क्वेश्चन डिस्कशन करते आई थिंक द नेचर कौन एडवाइजरी इन नेचर हाँ नहीं नेचर कौन एडवाइजरी गुड इन आंसर कौन हो एडवाइजरी इन नेचर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच अथॉरिटी रेगुलेट्स द स्टॉक अच्छा ये आसला स्टॉक मार्केट ऊपर आसला क्वेश्चन राइट आंसर आसला स्टॉक मार्केट व्हिच अथॉरिटी रेगुलेट्स द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आरबीआई सेबी आईआरडीएआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्टॉक एक्सचेंज को हाँ नहीं स्टॉक एक्सचेंज को किए रेगुलेट करे कौन हम आंसर 35 सेबी लुका कौच सेबो सेबो ना गोटे फिल्म रे गोटे नथिला हाँ ना नहीं आंसर किए करे
सेबी करे। ओके, आंसर की स्टॉक एक्सचेंज को किए रेगुलेट करे? सेबी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसेक्स इज द स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ व्हिच एक्सचेंज? एनएसई होना नहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ना एनवाईएसई ना एलएसई, कहार सेंसेक्स कहार कहा रिकमेंड? अमित कुमार, आंसर कौन हबो? सेंसेक्स इज द स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ व्हिच एक्सचेंज, कौन हबो आंसर? बी, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रे सेंसेक्स कौन करे? इंडेक्स को कोठी सेमती एनएसई रे कौन? एनएस एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रे इंडेक्स कौन? सेमती सेंसेक्स सेमती तार कौन? निफ्टी। जानिଛ आंसर कौन? निफ्टी। A stock exchange is an important factor in the dash market, money, capital, commodity, forex. कौन हम आंसर? कौन हम? आंसर हम ये हला कैपिटल मार्केट होना नहीं। आंसर कौन? ये हला स्टॉक एक्सचेंज कहार? कैपिटल मार्केट। ओके, बी, गुड। नेक्स्ट, where the shares of the company first offered to the public? Secondary market, primary market, derivative market, forex market. Where the shares of the company first offered to the public? Whose market? Primary market, secondary market, derivative market or forex market? आंसर कौन रहेगा? कोट रहइबो? बी, एग्जैक्टली आंसर हेबो बी, प्राइमरी मार्केट होना नहीं। केबे फास्ट ऑफर करा जाई? प्राइमरी मार्केट को। ओके, कोथरे? आईपीओ रे होना नहीं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, the term bull in the stock market terminology refers to? bull होना नहीं, bull आ गोटे अछि बियर होना नहीं। दीटा टर्म थाई, गोटे थाई बुल आ गोटे थाई बियर। काहाकू रेफर करा जाय? an investor who expect a fall in the price, an investor who expect a rise in price, a spectacular who buys and sells in a single day, a person who owns a large number of shares। कौन हबा आंसर? लुका कहछि बी। आज्ञा आसीगले, हाँ हाँ बुझीगली लुका तुम कौन कहूछ। बुल भितर बिग बुल। अच्छा, तो आंसर कौन हो? बी, an investor who expect a rise in the prices होना नहीं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ द निफ्टी? निफ्टी एसला नेशनल 5, नेशनल 50, नेशनल फाइनेंशियल इंडेक्स, नेशनल फ्यूचर इंडेक्स, फ्यूचर्स इंडेक्स। कौन हम आंसर को? कौन हम आंसर को? नेशनल 50, गुड। आंसर है निफ्टी फुल फॉर्म है नेशनल 50। ओके,
गुड एवरीवन कार बीएससी रे कौन थिला कौन थिला सेंसेक्स एनएससी रे कौन हैला निफ्टी जानिछो जानथबो ठीक अछि निफ्टी माने टॉप 50 कंपनी केते प्राइस रे रहिथिबो 16000 कोटी अनानी सेंसेक्स रे टॉप 21 टा ना 22 टा एग्जैक्ट मो मन पकई पर ओके which of the following is not a function of the stock exchange अनानी providing liquidity to the investors, facilitating price discovery, offering a platform for new issues, ensuring investor protection. Stock exchange रे कोटा यूज करा जाए नहीं providing liquidity to investor, facilitating the price discovery, offering a platform for a new issues, ensuring investors protection. कोटा दिए जाए नहीं क्वेश्चन पचाचे not a function ध्यान दियो not a function जदि कहे सार आप हसु ना कौन पाई बाबारे मोर गोटे मेजर ऑपरेशन होती बहुत कष्ट ठिया गत काली ऑपरेशन अच्छे जे से तुमको क्लास दूचे बॉडी से रेजिस्ट करूनी ओके आंसर कौन आंसर हम सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज आंसर हम देख लिक्विडिटी इन्वेस्टर को दिए फैसिलिटिंग प्राइस डिस्कवरी होनानी ताकू भी करे इंश्योरिंग इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन को भी करे किंतु कौन सी नुआ प्लेटफॉर्म दिए नहीं जोटा कि इश्यू को कौन करा जीवो कौन हम प्लेटफॉर्म को दिया जाए जे कि नुआ इश्यू को कौन करिवो डिस्कस करबा पई के होना नहीं नेक्स्ट which street is the Bombay Stock Exchange situated on बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी को जगह अच्छे गांधी स्ट्रीट दलाल स्ट्रीट शिवाजी स्ट्रीट आंबेडकर स्ट्रीट इट्स ओके स्टडी अदर किसी बड़ इश्यू नहीं which street is the Bombay Stock Exchange situated on गांधी स्ट्रीट दलाल स्ट्रीट शिवाजी स्ट्रीट आंबेडकर स्ट्रीट कोठी अछि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आंसर है कोठी एक्सीलेंट दलाल स्ट्रीट होना नहीं लोकेटेड इन दलाल स्ट्रीट ऑफ द मुंबई होना नहीं बीएससी के सिंपल उसे तो कही मुंबई दलाल स्ट्रीट ओके हाँ से फिल्म देखिए तुम सब जानी देथिबो नहीं बिग बुल को ऊपर when was the national stock exchange of india nse founded 1990 1992 94 96 1990 92 94 96 होना नहीं आंसर कौन एनएसपी केबे फाउंडेड हेतला गुड आंसर है 1992 होना नहीं ना बाबा सेठी दलाल रुहंती नहीं आगुरु रखुतिले होना नहीं यही कारण पे ताको कहे दलाल स्टेट ओके ठीक बुझुछ प्रणाम अनुपमा से क्लास पढ़ला बेलू आसूँ अनुपमा 1992 नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द ब्लू चिप कंपनी बढ़िया क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मजादार क्वेश्चन कोठी आगुरी देखि नथिबे क्वेश्चन a company with high debt a company with low share prices a company with a strong reputation and financial performance a newly established company बढ़िया क्वेश्चन ब्लू चिप गुड गुड लोका गुड 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 ए कंपनी विथ ए स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होना नहीं आपको कहुए ब्लू चिप कंपनी जो मैंने सब ट्रेडिंग करुथिबो सेही माने ही होना नहीं
जो माने ट्रेडिंग सब करूथिबो सेई मानक पाखरे ब्लू चिप कंपनी ऊपर नॉलेज थिबो होना नहीं स्ट्रांग फंडामेंटल गुड टाटा एक्सिस बस बस गुड लोक होना नहीं ताको जे ब्लू चिप कंपनी माने रखो गुड गुड लोक होना नहीं The Security Exchange Board of India (SEBI) is the regulated body of the stock exchange in India, and it ensures fair practices in the securities market. The statement is correct or incorrect? The answer कौन होगा? Correct or incorrect? है ना नहीं? The Security SEBI is the regulatory body of the stock exchange in India, and it ensures fair practices in the security market. True or false? Correct or incorrect? Good. Answer is correct. रमेश तार आंसर बापर धाडू धाडू आंसर दे दो नहीं करेक्ट नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एनकरेज सेविंग्स होने नहीं प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज कलेक्ट टैक्स मॉनिटर कमोडिटी प्राइसेस कौन हम आंसर स्टॉक एक्सचेंज प्राइमरी कौन हम आंसर को 36 अन्नपूर्णा कौची बी लुका कौची बी कालिया कौची बी कालिया एनबी कौन बी तो बी एनबी कौन provide a platform for buying and selling existing securities. Okay, good. Next question. When or when are the shares offered to the public? First offered to the public. Primary market. अच्छा এটা করিଥିଲି. Primary market, secondary market, derivative market, forex market. Okay. तो କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ କରାଯାଏ ଫାଷ୍ଟ କେବେ ସେୟାର କୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫର କରାଯାଏ ଆଇପିଓ 3 ରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ମାର୍କେଟ ରେ ହିଁ କରାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ହଁ ନା नहीं आंसर है प्राइमरी मार्केट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ ये कंपनी शेयर फास्ट ऑफर टू द पब्लिक क्वेश्चन को बुले देला जहां हमें पढ़िथिले सेम क्वेश्चन को हम कोन कले बुले देले होना नहीं कहला ये कंपनी शेयर्स ऑफ फास्ट ऑफर टू द पब्लिक शेयर्स आर द कोन बॉट बैक द कंपनी ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इंश्योरेंस ऑफ द बॉन्ड तो आंसर कोन हबो हम्म आंसर हो फास्ट कौन फास्ट ऑफर टू द पब्लिक आईपीओ कोठी करा जाए होना नहीं क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन को जस्ट भूले देला से क्वेश्चन राइट आंसर हो ए कंपनी शेयर्स आर फास्ट ऑफर टू द पब्लिक नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एमसीएक्स होना नहीं ए काइंड ऑफ सुपर कंप्यूटर टाइटल ऑफ द मून इम्पैक्ट प्रो स्टॉक एक्सचेंज न्यूक्लियर पावर सबमरीन यूपीएससी क्वेश्चन आसला 2009 एमसीएस एसएक्स कौन हवा आंसर अन्नपूर्णा नायक कोची आइडिया नहीं हाँ ना नहीं आंसर है जीव कौन सी ओबीएसली स्टॉक मार्केट ऊपर हमें पढ़ुचे तो आप चिंता करिया कथा कौन तेणु एमसीएक्स कौन स्टॉक एक्सचेंज ठीक अच्छे लास्ट क्वेश्चन तुम इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू यूपीएस अच्छा इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू शेयर मार्केट हॉर्स रेसिंग टैक्सेशन इंटरनेशनल ट्रेड हाँ नहीं पुणी से यूपी अच्छा यूपी रो पीसीएस रस्ते 2007 रे इनसाइडर ट्रेडिंग क्या पचे ओबीएसली आंसर है शेयर मार्केट हाँ नहीं এটা হলো তোমাদের কোশ্চিন ঠিক আছে ওকে ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ